class 11th physical education offline class. The supports injury जो हमारा टॉपिक है. Today we are discussing the treatment for the injuries and the preventive methods for the different injuries, prevention of the different injuries. अगर हम treatments की बात करेंगे, first there must be the complete treatments about the different injuries. अगर injury serious हो या minor हो या major हो, something that like injury, it happens. When it happens, there may this different type. First we have to utilize. First we have to use the first aid. First aid में क्या आता है? Riser, rest, ice, elevate, compression, and rehabilitation activities. RICER, riser जिसको बोलते हैं. But the complete treatment means there are so many injuries which we can rehabilitate to some extent if there are minor. या जिनको माइल्ड इंजरीज भी बोलते हैं, टू सम एक्सटेंट वी कैन सी देम, टू सम एक्सटेंट वी कैन रिहेबिलिटेट देम एट देयर होम. बट मेडिकल चेकअप हैज वेरी मच इम्पोर्टेंट. हाउ वी कैन से दैट मेडिकल इम्पोर्टेंट, मेडिकल चेकअप हैज नॉट इम्पोर्टेंट. तो मैंने कुछ यहाँ पॉइंट्स पे लिखे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट देम. नंबर फर्स्ट इज अ कंप्लीट रेस्ट. मीन्स व्हेन देयर इज एन इंजरी, वेदर इट्स माइल्ड, वेदर इट्स सर्व, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इंजरीज, देयर मस्ट बी द कंप्लीट ट्रीटमेंट, देयर मस्ट बी द कंप्लीट रेस्ट. कंप्लीट रेस्ट में क्या आता है? एक तो कंप्लीट रेस्ट ऑफ दैट वेरी बॉडी पार्ट, चाहे वो जॉइंट हो या लेग हो, आर्म हो, शोल्डर हो, उसका कंप्लीट रेस्ट करना. क्योंकि जो इफ वी मेक द फर्दर मूवमेंट, इट मे वर्स, वी कैन लॉस द मूवमेंट ऑफ दैट जॉइंट इफ देयर इज एन इंजरी. Yeah, if we can make something much more movement, it will make much more worsening of the condition. So we have to prevent the injured part. So we must make the complete rest of that very body part and also to our body. Number 2 is the chirotherapy. There are the separate different injuries like in which there is a fracture, sprain, strain, lacration, abrasion. These injuries might be to some extent, these injuries might be to some extent इनको ये ठीक किया जा सकता है to some extent. तो it must be एक तो complete rest first of all. Number 2 is the chirotherapy. Means we have to use the ice. क्योंकि when there is a blow, when there is a struck over our muscles, our tissues, our cells, much more मतलब या उनसे they died. जब वो डेड हो जाते हैं, we have to use the because of the much more compression या much more force. So उससे क्या हो जाता है? We have to use the ice therapy, जिसको कायरोथेरेपी भी कहते हैं. आइस थेरेपी we have to minimize तो मतलब अपनी बॉडी जो मसल जो हीट अप हो गया है, we have to reduce the heating, so that we have to use the ice. आइस उनको देना है आराम से. नंबर 3, उसके बाद मैसेज हैज एन वेरी मच इम्पोर्टेंस. क्योंकि इससे क्या हो जाता है? इट बिकम्स वेरी फ्लेक्सिबल, it gives much more smoothness to our body muscle, it gives much more smoothness to our body. तो injured part होता है, it reduce their swelling, maybe there may be the swelling, it reduces the swelling, it reduces the much more मतलब it gives them much more strength. Yeah, massage has very much. Number 4 is the rehabilitative activity. The rehabilitative activity means when we have to make a little bit activity, little bit exercise of that body part. That will gain strength, as well as that gives the strength, as well as that gives them the rehabilitative exercise. So that rehabilitation activities has very much important. अब थोड़ा सा बात करेंगे prevention of the injury. अगर हम prevention की बात करेंगे, how injuries happen, it must be the ये हमारी गलती होता है कि our body is not properly warmed and our body is not properly prepared. अगर हम वार्म अप की बात करेंगे, there may be the 2 types of warm up. एक तो होता है psychological warm up, दूसरा होता है physiological. Means we must be both mentally and physically prepared for any activity. जब हम both physically भी available होंगे, physically भी prepare होंगे, physically भी मतलब फिजिकली भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे, फिजिकली प्रेजेंट माइंडेड भी वहाँ होंगे, और हमारी बॉडी मतलब फिजिकली तो प्रेजेंट होंगे इफ वी आर मेंटली प्रिपेयर, इफ वी आर मेंटली देयर, सो दैट देयर मे लेस चांसेस ऑफ इंजरी. और वहाँ पर प्रॉपरली मीन्स वी हैव टू मेक आवर बॉडी इन ए पोजीशन,
where we can face the jerks, where we can face the we can face the pushes, pulls. Go, our body must be very flexible. Our muscles must be very ready in a ready position. We must be both mentally alert and physically भी हम alert होने चाहिए. Then there are the very rare chances, कम chances होते हैं, and it minimizes the chance of injury. जब हम physically और mentally we are very alert, cautious होंगे, और physically भी हमारी body in a very good condition prepare हो. Number 2 is the protective equipment. There are और भी preventive methods है, but मैं कुछ important सिखा रहा हूँ. Protective equipments, the gear equipments इनको बोलते हैं protect. So we should utilize. हमें तो properly utilize करने चाहिए the equipments. Why these equipments has been मतलब इनको involve क्यों किया गेमों में, कि इनको यूज क्यों किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉलर यूज किया था, वो मतलब ये कि वो अपनी नी कैप्स पे, अपने जॉइंट्स पे क्रैब बैंडेज या इलास्टिक समथिंग लाइक दैट. So these things should be utilized in order to minimize the chance of injury. Number 3 is the knowledge. Knowledge means has very much important. Knowledge means we must have the proper knowledge of the game. Knowledge of the game. Knowledge of the protective equipment, knowledge of the rules and regulations. If we did not have the proper knowledge, then there are the chances of injury. कौन सा equipment कैसे इस्तेमाल करते, कौन से rules apply करने, how we have to tackle the situations like that. These are the very much important techniques. These are the very much important